हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी डिज़ायर। हम कर रहे थे चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जो कि क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर है। अब इसमें हमने मोस्ट ऑफ द टॉपिक पूरा कवर कर चुके हैं, सिर्फ एक लास्ट टॉपिक बचा है। सो इसके पहले हमने जो हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसमें कि हमने सेपरेटली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स या फिर हम कह सकते हैं मेल रिप्रोडक्शन और फीमेल रिप्रोडक्शन को पढ़ा। रिप्रोडक्शन को हमने पढ़ लिया इतना। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा है, जो आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ, वो है पॉपुलेशन कंट्रोल। एकदम इसकी बात करेंगे, पॉपुलेशन कंट्रोल की। और दूसरा जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ या फिर कुछ जो डिसीजेज जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिट होती हैं। सो आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉपुलेशन कंट्रोल की। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल, क्योंकि हम जानते हैं कि किस तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है। ठीक है, और साथ ही साथ में कि अगर एक फीमेल बार बार बर्थ देती है बेबीज को, तो शी विल बिकम वीक। So it is like more good that she will have 1 or 2 babies. So here a population control method is required. So let us understand about this. So basically population control का हम क्या बोल सकते हैं कि रेगुलेट कर रहे हैं या फिर हम रेगुलेशन कर रहे हैं कंसेप्शंस का, जो फीमेल्स कंसीव करती हैं। सो हम यहाँ लिख सकते हैं द regulation of conception। और ये किससे करते हैं? बाई सम प्रिवेंटिव मेजर्स, बाई प्रिवेंटिव मेजर्स, ताकि जो फीमेल्स है वो कंसीव ना कर सके। मेजर एंड ऑल्सो, और साथ ही साथ जो प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं उसमें क्या यूज़ कर सकते हैं, कुछ डिवाइसेस यूज़ होती हैं। ठीक है, और डिवाइस ताकि कंट्रोल कर सके नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, टू कंट्रोल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। सो ये क्या हो गया? दिस इज एक्चुअली द बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल है ये। नाउ कमिंग टूवर्ड्स नेक्स्ट। अब हम जानते हैं कि बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर्स और डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं आज के, लाइक फीमेल्स यूज़ करती है प्रिवेंटिव मेजर्स और डिवाइसेस सो दैट दे कैन नॉट कंसीव। ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट देम वन बाय वन। अब इनमें से जो कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं या फिर जो डिवाइसेस होती हैं, इनमें से कुछ क्या करती हैं? प्रिवेंट करती है फर्टिलाइजेशन को, प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, ताकि फर्टिलाइजेशन नहीं होने देती है, मतलब फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट नहीं होने देती। कुछ जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, डिवाइस हैं, वो क्या करते हैं? किल कर देते हैं, किल स्पर्म्स। इन कहाँ पे किल करते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, ताकि जो स्पर्म्स है वो जो फर्टिलाइजेशन साइट तक ना पहुंच पाए। ठीक है, अब दूसरा हम देख सकते हैं इनमें से कुछ क्या करते हैं, जो प्रिवेंटिव मेजर है, ठीक है, या फिर डिवाइसेस है, वो क्या करते हैं? प्रिवेंट कर देते हैं इम्प्लांटेशन को, ताकि जो इम्प्लांटेशन वो प्रॉपरली अगर यूट्रस की वॉल में नहीं हो पाएगा, सो कंसीव नहीं होगा। प्रिवेंट करते हैं इम्प्लांटेशन को। ठीक है, सो बेसिकली ये क्या कर रहे हैं? इट हेल्प्स वुमेन टू अवॉइड द अनवांटेड प्रेगनेंसी। सो लेट अस राइट हियर, it helps to avoid, it helps women to avoid
unwanted pregnancy. Okay, now let us write them one by one. Like these are under the following. So here we'll be writing categorized as, broadly categorized as the preventive measures are broadly categorized as, so पहला हम लिखेंगे यहाँ पर बैरियर मेथड, बैरियर मेथड। इनको हम सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे डिटेल में। दूसरा होता है हमारा केमिकल मेथड। तीसरा हम यहाँ लिख लेंगे इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जिसको हम बोलते हैं आईयूसीडी, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जिसे हम बोलते हैं आईयूसीडी। और हम फोर्थ लिख लेते हैं नेचुरल मेथड होता है, नेचुरल मेथड। और लास्ट होता है, फिफ्थ होता है सर्जिकल मेथड, सर्जिकल मेथड। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम बैरियर मेथड। सो पहला जो होता है हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, लेट अस राइट ओवर हियर बैरियर मेथड होता है। सो बेसिकली क्या होता है, ये फिजिकल डिवाइस है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे these are physical device। Now basically this barrier method, it prevents the entry of sperm in the female genital tract. So here we can write it prevents the entry of sperm into female genital tract। ताकि अगर जो स्पर्म सेल्स अगर फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में एंटर ही नहीं करेंगे तो वो एग को फ्यूज भी नहीं कर सकते। और ये कब होता है, ड्यूरिंग कॉप्यूलेशन। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, अब ये जो बैरियर मेथड है ना, इट इज ऑल्सो हेल्पफुल दैट इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट द सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। सो दे ऑल्सो protect from sexually transmitted disease. What the meaning of this? The diseases which are transmitted through the sexually contact, actually transmitted disease। अब यहाँ पे हम बात करेंगे like some common barrier methods की। So, some common barrier methods। So, सबसे पहला होता है जो कि यूज ऑफ कॉन्डम्स। ओके, नाउ लाइक दीज आर स्ट्रॉन्ग रबर शीट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग rubber sheets। It actually covers the penis, erect penis। Okay, and at the time of copulation it does not allow the entry of sperm into the female genital tract। So it covers erect penis। So this how like the pregnancy is prevented। Getting everyone? Now coming to next, actually this is the method, the best method which gives best result। Okay, now coming to the next is under the barrier method, we're talking about
Femidom. So as like similar to the condom, it is actually a contraceptive method also, and it is a thin rubber. Okay, it is actually it covers the vaginal part. So it is thin rubber, or we can say polyurethane tube. Okay, and it fits into the vagina, inside the vagina. It fits inside vagina. Okay, so basically it also prevents the entry of the sperm into the female vaginal tract, or we can say the female reproductive tract. So here we can write, it prevents the entry of sperms into female reproductive tract or the female genital tract. Now coming to the third one over here is the diaphragm or the cervical cap. Cervical cap. Now it is again the flexible rubber that covers or fitted over the cervix. Okay, so here we can write flexible rubber, or it is made of plastic which cover or we can say it is fitted over the cervix. Fitted over the cervix. And where it is found, where it is fitted, like in the female's vagina. In the female's vagina. Now also it checks the entry of sperm into the uterus. Now like these are smeared with some spermicidal jelly also. So here we can write spermicidal jelly is also present over here. Spermicidal, that means which kills the sperm. Sperms make the sperm cells, and cidals means some substance which kills the sperm cells. Okay, so basically it kills the sperm cells. Now like it is actually the main function of it is to prevent the entry of the sperms into the so that the sperm cell cannot reach to the fertilization site. So यहाँ तक हमने डिस्कस किया हमारा बैरियर मेथड. So 3 बैरियर मेथड हमने यहाँ देखे, condoms, femidoms and the cervical gap. Now coming to the next one, and that is the chemical method. So by the use of chemicals, the pregnancy is prevented. तो यहाँ पे हम दूसरा लिख देंगे chemical method. So basically chemical method में some of the chemicals are being used or its product. So basically वो क्या होते हैं, like foam tablets, और हम क्या बोल सकते हैं, वो जेलीज हो सकती हैं, जेलीज लाइक, या फिर पेस्ट, या फिर कुछ क्रीम्स भी अवेलेबल होती है मार्केट में, एंड ऑल्सो द फाइनली स्पर्मिसाइड्स. So like these are some of the common chemical which is used by the females. Common chemicals which is used by females, so that when the sperm cells reaches to the female genital tract, they have been killed, so that the fusion of the male and female gamete cannot take place. Now these chemicals also adhere to the mucous membrane, and they kill the sperm cells. Now some of the chemical which are commonly used are oral pills also. Oral pills. Now like these also check the ovulation. So basically these are mainly a hormonal preparation and contain the estrogen and progesterone.
Now these oral pills are taken up by the females. This actually prevents the development of egg and also inhibit the ovulation. So it prevents the development of eggs in the ovaries, and also it inhibit the ovulation. Inhibit ovulation. That means like when the egg is not released and like not present at the fertilization site, and when at that time the sperm cell reaches, so there is no egg cell available for the sperm cell to fertilize, and hence the pregnancy is prevented. So like these are called the oral contraceptives. इन्हें क्या बोलते हैं? Oral contraceptive, and short forms we say it as OCs. Now coming towards the next, the chemical method which we are going to discuss is the next is vaginal pills. So let's come to the next page and discuss about vaginal pills. अब ये जो पिल्स होती है बेसिकली ड्रग प्रिपरेशन होता है और ये कंटेन करता है स्पर्मिसाइड्स. सो दीज आर ड्रग प्रिपरेशंस जो कंटेन करता है विच कंटेन स्पर्मिसाइड्स. So basically they are used before the copulation by the women. अब हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया जो केमिकल मेथड्स है. Now let us talk about the intrauterine contraceptive device. So the third one is intrauterine contraceptive device, and we can the short form is IUCD. अभी जो डिवाइस होता है इट इज़ लाइक यूज बाय द विमेंस. ये कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होता है एंड लाइक इट इज़ मेड अप ऑफ कॉपर. सो इट इज यूज्ड बाय वुमेन्स. Second one is that it is contraceptive device. It is contraceptive device. That means a device which helps to prevent the pregnancy. And finally, this device is made up of copper. Is made up of कॉपर. ये किसका बना होता है? कॉपर का. प्लास्टिक्स का भी बना होता है, ये आजकल मिलता है प्लास्टिक्स का भी. प्लास्टिक और या तो फिर स्टेनलेस स्टील और स्टेनलेस स्टील. अब इससे हम क्या बोलते हैं? जो इंट्रायूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस इसे क्या बोलते हैं हम? कॉपर टी. कॉपर टी, क्योंकि इनिशियली ये किसका बना होता था? कॉपर का. और इसका शेप कैसा होता था? टी लाइक शेप होता था. सो बेसिकली द कॉपर टी इट इज इंसर्टेड इनटू द यूट्रस. सो कॉपर टी is inserted in uterus, and like we cannot perform this. Okay, this is only done by the doctors, the skilled doctors or skilled nurses. Okay, now this copper T is left in the place inside the uterus, and hence it prevents the implantation. So what does this copper T do? हमें पता चल गया कि कहाँ इसको प्लेस किया जाता है? यूट्रस में. तो इसका वर्क क्या है वहाँ पे? इट प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन इन यूट्रस. अब जब एम्ब्रियो यूट्रस में इम्प्लांट ही नहीं होगा तो फिर फाइनली जो वुमेन्स कंसीव करते हैं वो कंसीव भी नहीं होगा. ओके. So like here we have discussed about the intrauterine contraceptive device. कुछ अदर इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होती हैं जैसे कि वो लूप होती है.
स्पाइरल रिंग हो सकती हैं, बो एंड शील्ड हो सकती हैं. सो बेसिकली दे आर प्लेस्ड फॉर लॉन्ग पीरियड्स. सो these are placed for long periods. Here this can be up to 5 years depending upon them. Some are for 3 years, some are for 10 years also. अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं और बेसिकली ड्रॉबैक्स सारी फीमेल्स में नहीं होते, कुछ में ही होते हैं. सो ये ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं? ब्लीडिंग, मतलब इरेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है और डिस्कम्फर्ट हो सकता है. Now let us talk about some of the natural methods. So coming to the next, the fourth one is the natural method. So basically ये जो natural method है, it includes some of the methods. Like first we can discuss as avoid copulation. Avoid copulation. That means to prevent pregnancy, the natural method is avoid copulation. Coming to the next is the rhyme method. Basically, avoid copulation is known as the abstinence. Abstinence. Now coming to the next is the rhythm method. Rhythm method. Now this method is in this, like the copulation can be avoided at the time of ovulation. So that means when the ovulation, that means when the egg is released and like egg is reached to the fertilization site. So that is approx 12 to 15th day of the menstrual cycle. So between those days the copulation can be avoided. So to avoid the pregnancy. So here we write avoid copulation around the time of ovulation. The time of ovulation. And the last one is that coitus interrupts. Coitus interrupts. That means like the withdrawal of the penis just before the ejaculation of the semen. So let us write over here. Withdrawal of penis just before the ejaculation of semen into the female genital tract. So like these are some of the natural methods. Now finally coming to the last one, and that is a surgical method. So coming to the next is the surgical method. Surgical method. अब ये जो surgical method होते हैं, these are safe for the long run. So safe for long run. Okay, now coming to next, like this are only done by the surgery. Okay, surgery is required. Surgery is required. अब ये सर्जरिकल मेथड दो टाइप्स के होते हैं. पहला है वेसेक्टॉमी और दूसरा है ट्यूबेक्टॉमी. अब ये जो वेसेक्टॉमी है, पहले बात करते हैं वेसेक्टॉमी की. वेसेक्टॉमी, हाँ, अब ये जो वेसेक्टॉमी है, बेसिकली दिस इज अ स्मॉल ऑपरेशन और सर्जिकल ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड ऑन मेल. So surgical operation is performed on males. अब इसमें क्या होता है, like it involves a removal of small portion of the sperm duct और the cutting of the sperm duct. और जो sperm duct कट करते हैं, फिर क्या करते हैं, उसे अलग अलग नॉट लगा देते हैं, टाई कर देते हैं. ठीक है, सो हम लिखेंगे removal of sperm duct, small portion, हम यहाँ लिखेंगे small portion, removal
removal of small portion or simply the cutting of sperm duct मतलब कि जो वास्ट डिफरेंस है, एंड देन टाइट अगेन, और फिर जो दो कट एंड्स है ना उन्हें क्या करते हैं, टाई कर देते हैं, टाइट और लाइगेटेड. सो द टू कट एंड्स देन लाइगेटेड, या फिर हम उसे बोलते हैं टाइड. अब इससे क्या होगा, जो स्पर्म्स है ना दे विल नॉट exit or the come out from the penis. So here we can write it prevents the sperms from coming out. It prevents the sperms from coming out. Let us see the diagram of it so you can understand clearly. So यहाँ पे देख सकते हैं from the testis the sperm ductus arises and like it will move towards the penis, और इधर से भी. अब यहाँ क्या किया गया, इसे काट दिया, ठीक है, 1 इधर काटा और यहाँ पे 2. अब यहाँ क्या किया, फर्स्ट स्टेप में से काटा और सेकेंड स्टेप में लाइक दीज आर लाइगेटेड. सो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट में कटिंग और सेकेंड स्टेप में क्या किया, लाइगेटेड. दैट मीन्स यहाँ पे नॉट लगा दिया थ्रेड से. अब क्या होगा कि जो स्पर्म सेल्स बने हैं टेस्टिस में दे विल नॉट रीच हियर एंड दे विल फाइनली नॉट कम आउट फ्रॉम द पेनिस. सो इस तरह से लाइक इट इज़ द मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. अब हम आते हैं नेक्स्ट जो मेथड है वो है ट्यूबेक्टोमी. So let us understand from the diagram first and then we will write. तो ये क्या है ट्यूबेक्टोमी. अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जैसे कि हमने पढ़ा था कि वेसेक्टोमी में स्पर्म डक्ट को काटते हैं, ट्यूबेक्टोमी में इस फैलोपियन ट्यूब को कट करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, फिर फाइनली से लाइगेटेड कर देते हैं, टाई कर देते हैं थ्रेड से. सो अब क्या होता है कि अगर जो एग सेल है वो रिलीज हुआ है ओवरी से, सो वो अगर मान लीजिए फर्टिलाइजेशन साइट तक पहुँच भी जाए, लेकिन स्पर्म सेल फर्टिलाइजेशन साइट तक नहीं पहुँच पाते हैं. सो इसीलिए जो प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो जाती है. सो ये क्या है, एक सर्जिकल मेथड है, सर्जिकल मेथड है ये, ओके. और एंड इट इज परफॉर्म्ड इन द फीमेल्स, परफॉर्म्ड इन फीमेल्स, ओके. नाउ फीमेल्स में क्या करते हैं, removal of the small portion of the fallopian tube by the surgical operation. Removal of small portion of जो ये fallopian tube है, fallopian tube या फिर जो ओविडक्ट होता है, और किससे किया जाता है ये, बाय सर्जिकल मेथड से और सर्जिकल ऑपरेशन से. अभी जो कट पोर्शन है ना, दीज आर अगेन लाइगेटेड विद द थ्रेड, सो इट एक्चुअली प्रिवेंट्स द ओवम टू एंटर द फैलोपियन ट्यूब इवन, ओके. सो फाइनली इट प्रिवेंट्स द fertilization. So till now like we have seen under the surgical methods the tubectomy and the vasectomy. Now that both the tubectomy and vasectomy are also known as a method of sterilization as these do not affect the normal sexual life. एक और लाभ फाइनली आता है, दैट इज नॉट द मेथड ऑफ अवॉइडिंग द कंसीव, ओके, और कंसेप्शन. इट इज एक्चुअली समथिंग एल्स व्हेन द वुमन हैज लाइक कंसीव्ड but she does not want that, so another method then that is known as the abortion. So let us write over here, abortion. Now particular, it is a medical termination of pregnancy.
It is medical termination of pregnancy, और इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, MTP. So now like this is done before the fetus become viable. So like the embryo is been like killed inside the womb only, so that to avoid the pregnancy. So till now we have talked about the birth control. Now let us discuss about the reproductive health and some of the sexually transmitted diseases. So let us move to the next page, and over here we'll be going to discuss about the reproductive health and sexually transmitted diseases. Transmitted diseases. So reproductive health, हम reproductive health को क्या बोल सकते हैं, reproductive health. So basically like taking care of ourselves, okay, and also like the reproduction is important as the important function as the nutrition, as the digestion and the excretion. Okay, so now taking care of one's individual related to the reproductive organs. Okay, so taking care of that also. Now like the physical fitness, mental fitness and the social fitness in the human beings is also needed. Okay, and that the reproductive health is also needed among them. It actually includes some aspects that ensures the possible safe and satisfying reproductive life. Okay, so now like some of the points we can count over here, like the marriage. So the marriage is done should be performed at the appropriate age of the girl and the boy, and also like the child bearing during more mature stages of the life. So that means a child should the girl should conceive at most appropriate age of her life. Girl, let me write it again, girl, she should conceive at when she's mature, at mature stage of her life. Getting? Now coming to the next is that like secondary school education should or we can say in the schools the education must be provided to the students related to the sexual life. So education should be provided to students related to sexual life. Okay, and also finally when the complications occur during the pregnancy or like during the abortions also, the women lose their life. So complications during pregnancies and even during abortion, women's lose their life also. And coming to the next, like some of the sexually transmitted diseases also there, which are like spread by the unsafe sexual contact. So sexually transmitted diseases are spread due to or by the unsafe sexual contact.
Now let us come to the next page and let us discuss about the some of the sexually transmitted diseases. So let us write over here sexually transmitted diseases. अब ये वो डिसीजेज हैं जो कि अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ट्रांसमिट होती हैं फ्रॉम अनहेल्दी इंडिविजुअल टू द हेल्दी इंडिविजुअल. So here we can write the infection, or we can say it is actually the communicable disease because it is like transmitting from the unhealthy individual to the healthy individual. So communicable diseases which are spread from an infected person to healthy person. एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिशन हो सकती है बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, और इसी को हम बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस. Okay, now we will be going to discuss about some of the sexually transmitted diseases one by one. So first one we will be talking about gonorrhea. Now like this is caused by the bacterium Neisseria gonorrhoeae. Caused by bacterium, it is actually Ni. Let me write it again. Neisseria gonorrhoeae. So ये किससे होता है? ये इस बैक्टीरिया से होता है जो कि Neisseria gonorrhoeae. Okay, now let me make underline properly. Yes, as is the scientific name of the bacteria. Now what are the symptoms occur in this? So the actually victim feels like burning sensation and also the pain during urination urination के टाइम में the patient will feel like the burning and the pain. Okay, अभी जो disease है basically it cause inflammation of the mucous membrane of urinogenital tract. So here we can write it cause inflammation of mucous membrane of the urinogenital tract. Okay, even we can say that in the urinogenital tract also the inflammation occurs in the rectum also. Or in the throat and in the eyes also. Rectum, throat, and even in eyes. Okay, now like there may be pus, release of the pus from the penis also. Okay, and excessive secretion of from the vagina. So release of pus from penis and the excessive secretion of vagina. Secretion from vagina, and like it is spread by the sexual contact. It is spread by sexual contact. That is why it is known as the sexually transmitted diseases. Now cure. Okay, this disease will be easily cured by the antibiotics. Cure by
antibiotics. Okay, so the patient can contact the doctor and the proper antibiotic treatment can cure this disease. Now coming towards the next disease is the syphilis. So second one is the syphilis. Okay, now the syphilis, it is caused by the bacterium, and that is Treponema pallidum. So the bacteria which causes syphilis is the Treponema bacterium. Now like this disease is a chronic illness. It is chronic illness and it affects the mucous membrane in genital tract, the rectal and the oral regions also. So here we can write affect. It affect the mucous membrane in genital tract, also, the rectal and also the oral regions also, and like it causes the lesions also. It cause lesions. Here next we can say that the infection, it is occur by the sexual intercourse, so that is why it is the sexually transmitted diseases. So transmitted to another by sexual contact. Okay, and like finally the syphilis, it has been cured by the antibiotics. Cured by, here we can write cure by antibiotics. Okay, now coming to the next disease, here we'll be going to discuss about the HIV, which is very dangerous. So it is the human immunodeficiency virus. Immunodeficiency virus, which cause the disease AIDS. Okay, so AIDS is actually the acquired immunodeficiency syndrome. Okay, now particular this AIDS, it is caused by the virus HIV. So AIDS is caused by the virus HIV. Okay, and like as this is caused by the viruses, okay, like it is very difficult to cure. So here we can say that like till now there is no such medicines has been made to cure this disease AIDS. So basically this AIDS is it is transmitted through sexual contact. Transmitted through sexual contact also. Okay, blood transfusion, by the blood transfusion also. If suppose the blood has been taken, okay, from any individual who is like already suffering from the AIDS, and now the blood has been entered into the healthy individual, the person will suffer from this disease. Transfusion. And also by infected needles, the needles which is used by the doctors for injections. So and also by contaminated razors, etc. Okay, so like for this particular AIDS, it is a deadly disease as it affects the here we can say that our immune system. Okay, it affects
the immune system. So the person becomes very weak. The person cannot fight against diseases, and he became prone to such diseases. Now, what are the preventive controls for this? Preventive controls. Okay, so here we can say that like a large number of people, okay, or a group of people are under this risk. Okay, so like the main control method is using the barrier method. Barrier method. This is the only method which can be by using which the people can be safe from this sexually transmitted diseases. Okay, now other one, the last one is also there, and that is the warts. Warts is another sexually transmitted disease which is caused by, it is STDs, and like caused by viruses. Virus. Now, like December 1, it is celebrated as the World's AIDS Day. And on this for December, like the awareness regarding the AIDS has been spread, given to the people. So अभी तक हमने कवर कर लिया हमारा चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. अगर इस टॉपिक में आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं. जो मैं अब नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊँगी वो आपके लिए लेकर आऊँगी हेरेडिटी का. सो अगर आपको मेरा ये जो वीडियो है पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू डियर स्टूडेंट्स. बाय बाय एवरीवन.